and what they were and what they are, and you know what they have become in life. 25 years, 26 years, they just flash by. तो कौन कौन कैसे रूप में आया था और कैसे लाइफ इवॉल्व होती गई, चेंज होती रही, and a lot of them have transformed to a level which you cannot even recognize कि अच्छा ऐसे थे. And same goes to me. Transformations happened over a period of time. So it was a lovely, every time when I'm about to enter the hall, this journey happens from the first batch to the last batch. I go through that. And yesterday, what an awesome time we had in the batch. I think some of you are there in Happy Minds also from yesterday's batch. Abhi kal ka din kaisa raha if you're there? Hmm. How was yesterday's day? कल जो लोग बैच में थे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर टुडे इन हैप्पी माइंड्स, बिकॉज कल भी दिन भर मुझे सुना है, सुबह भी मुझे सुनोगे, आज फिर दिन भर सुनोगे, कल भी सुनोगे. हाउ मच, आई डोंट नो हाउ मच you will listen, but if you're there, I don't know. Santosh Pulla sir, fantastic. Bought a lot of learnings. Yes, learn a lot. Is there? He says, learn a lot. Mast tha, Subhash says. Arey wah, mind blowing. Achha, a lot of you are there. Good. Sonal says, mind blowing. Feeling so positive. Wow. Subhan. Super, Vivek says. That's nice. That's wonderful. Uh, and I look forward to today, and you also look forward to today's session. Krishna says, amazing. Okay, we have the audience in YouTube also. They joined in. Namaste, YouTube viewers and all seekers on YouTube. Welcome to this week's Happy Minds. This is Happy Minds number 1197. And yeah, Isha says, looking forward to take more from you. I'm just a sponge, want to be full with words of wisdom from MD sir. Oh, wow, that's nice. Hmm. Like a sponge, you want to absorb as much as possible, and that's the way it should be. So much is there in life for all of us to absorb and take away and make our lives better. And in return, we make the lives of people around us a lot better. मुझे याद आ रहा है, somewhere maybe I must have been 5 or 6 years of age, and I'm the youngest in my family in terms of my brothers. तो दो बड़े भाई ऊपर और आप सबसे छोटे हो और 5-6 साल के आप हो. So we used to go to play cricket, and uh, next to a house, around 200, 300 meters from a house, there was a big field which we called as flats in my hometown, Nainital. So nowadays the flats has gone for a toss. Now they made it a parking, and then a lot of things happen there except the sports. So उस समय पूरा एकदम ऐसा open ground होता था. And we would have different sports at different times of the year. We would have cricket, then we would have hockey, we would have basketball, we would have uh, hockey would happen there. So ऐसे हर सीजन का एक स्पोर्ट वहां पर खेला जाता था. एंड मुझे याद आ रहा है कि जब मैं आई थिंक 5 या 6, 5-6 साल का होऊंगा, सो आई वुड अकम्पनी माई ब्रदर्स. एंड सुबह सुबह हम जाते थे छुट्टियों में, एंड देन वी वुड प्ले क्रिकेट. सो दे वुड प्ले क्रिकेट एंड आई वुड बी दी जब सबसे छोटा है तो भाई आपको बाहर बिठा दिया जाता है, तो यू जस्ट गो देयर टू वॉच, मे बी यू देयर टू टेक केयर ऑफ जैकेट. सबके जैकेट्स पड़े हैं तो आप वो ध्यान रख रहे हो. एंड आई वुड ऑलवेज थिंक कि अरे ये लोग खेल रहे हैं मैं कैसे खेलूं, बिकॉज मन होता था खेलने का, बट सब लोग बड़े हैं आपसे उम्र में, तो उन लोगों की टीम बन जाती थी, एंड देन दे वुड प्ले. वन डे माय एल्डर ब्रदर जीतू भैया, he came over and he tossed the ball to me. And I remember I was around 5 or 6 years of age. And he said, Chal bowling kar. And he must have been what? I was 5, 6. He must have been 10, 11 years of age. But वो मुझे सीन अभी भी इतना अच्छा याद है कि he gave the ball to me and he said, Chal bowling kar. That day I felt, but I've arrived. And I bowled and I don't know what happened after that. वो memory मुझे है नहीं. But मुझे इतना याद है, then when he handed over the ball to me, I felt so powerful about myself कि मुझे bowling करने को बोला गया है. And I'm a part of the team. And that has stayed with me for years. And when I look back, there have been so many times when my elder brother, he has given me one opportunity after another, whether it be in the restaurant, whether it be when we had our food processing unit, where he made me do things. And right throughout my life, he would always put me ahead. अच्छे तू ये करके आ, ये करके आ, ये करके आ. And yesterday when I was taking the batch,
I could relate this, and I have been able to relate this every time in the batch. In the batch, there are people who have walked in or who have joined the batch. So there are children uh, who have been sent by their parents. Their team members. So many entrepreneurs have sent their team members in the batch. And I want a couple of things, a couple of insights for all of you, if you can take back home a few insights from this. Okay, there are people around us who are willing to bet on us. तो जब मेरे भैया ने मुझे बॉल दिया एज अ 5 year 6 year यंग बॉय एंड मुझे उन्होंने बॉल दिया तो ही मस्ट हैव बेटेड ऑन मी कि यार ये बॉलिंग करेगा और ये विकेट्स लेगा और ही मस्ट हैव बेटेड ऑन मी कि यार ये इसको खेलने का मौका मिलेगा एंड मे बी ही विल डू समथिंग अबाउट that moment or he may become or whatever he may have thought in his mind. And right throughout my life, he gave me so many opportunities. And somewhere each opportunity was kind of a bet on me. कि तुझ पे दांव लगाया है, चल. So yesterday in the batch when I saw some team members there, some children there, some spouses there, इसका मतलब जो आपको चाहता है, जिसके साथ आप हो, वो आपको जब भेज रहा है कहीं पर या आपके ऊपर वो दांव लगा रहा है, because sending somebody means you're paid the fees, you're making the person leave the work for a few days and make the person join the batch. तो आप दांव तो लगा रहे हो ना. तो बहुत जरूरी है ये हम recognize करें that there is somebody who's betting on us. बहुत जरूरी है recognize करें उसके उस भाव को, उसको उसके उस अप्रोच को कि किसी को हम पे तो भरोसा है कि हम पे वो दांव लगा रहा है और बहुत मुश्किल होता है किसी पे पैसे का दांव लगाना. So when I saw the team members yesterday, बेटे ये something is coming there. ये is it confirm your speaking language? Is it coming on your screen also? No, sir. Something coming. Okay, I got it taken care of. So ये बड़ा मुश्किल होता है दांव लगाना कि कोई आप किसी पे दांव लगाते हो. तो अगर आप पे किसी ने दांव लगाया है, आप पे किसी ने बेट किया है, it is so very important that you acknowledge that bet. सबसे पहला काम है you got to acknowledge that bet. And all of us, कहीं ना कहीं किसी stage of in some stage of our life, somebody did bet on us. किसी ने हम पे दांव लगाया. और दांव लगाना होता है 2-3 तरीकों से. कोई हमें पैसे पे दांव लगाता है कि and normally parents do bet on their children. चलो भाई तुम आए हो पढ़ लिख के, now I bet on you that you start this factory. So I've got this factory lined up, I got this land lined up, I got this investment lined up, and then you start your business. So parents do bet on their children because there is a bonding, there is a connection है, they love you. आप उनके legacy आगे लेके जाओगे and things like that. But जो आपके बच्चे नहीं, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं, या आप वैसे हो कि आप पे कोई दांव लगा रहा है लेकिन वो आपके कोई माँ बाप नहीं है, आपसे कोई चाहने वाले नहीं है, दे आर जस्ट स्ट्रेंजर्स, आउटसाइडर्स. जब वो आप पे दांव लगा रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट शुड बी ऑफ द हाईएस्ट लेवल. And that's where I feel sometimes people see it missing because there were times when I did not allow nominations for the batch. अभी हमने 5-6 साल पहले ये नॉमिनेशन चालू किया, उससे पहले हम नॉमिनेशन बंद कर दिए थे. नॉमिनेशन का मतलब क्या है? कंपनी पीपल कैन नॉट सेंड their team members for Life 360. I said you can send for business program. Life 360 में हम नहीं लेंगे nominations because we don't want people to come in. हम नहीं चाहते कि लोग अंदर बैच में आए और वो बैठे हैं as if it's a given. It's not. There's no entitlement for it. You got to earn your place in the batch. That was the approach initially, and for 10, 15, 20 years, we did not allow people to come in the batch and just because you were nominated by a company. Because आपको कंपनी ने भेजा है ना, तो आप तो ऐसे ऐसे बैठते हो कि अच्छा हाँ भेज दिया अभी आ गए. So we didn't want people like that. But then over a period of time, a lot of entrepreneurs they shared and they said नहीं नहीं सर आप लीजिए, these guys are good, मेरी टीम से रह जाएगी, हम कब इनको भेजेंगे, ये तो अपने पैसा कभी इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. And then we said okay, let's have people coming in from organizations, but we still don't take nominations from corporates. We still don't take nominations from entrepreneurs or from organizations जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने रस समझती नहीं किया या बिजनेस प्रोग्राम नहीं किया, because maybe it is just a training requirement to be fulfilled. The number of hours have to be taken care of. चलो जाओ ये कोर्स करके आ जाओ. And that's the reason why I left corporate training long back, because I didn't want to be a person who's filling training hours. I wanted to be there because I can make a difference.
I wanted to be there because somewhere I could make people understand that there is a better way to do their things, whatever they are into. But in over a period of time, HR or maybe the training department in organizations वो भी ऐसे बन गई कि जहां पर सिर्फ number of hours को टिक करना है, because it's a requirement in the organization. It is not a feeling that people have to become better. So I left corporate training somewhere in 2005 and 6, and then we stopped nominations in our programs. But when I see entrepreneurs sending their team members, I feel it's such a great gesture that they are betting on these guys. So all of you are listening to me, अगर आप पे कोई दांव लगा रहा है, वो इंसान जिसको आप पे दांव लगाने की जरूरत नहीं है, जिसको कोई ऐसा बंदिश नहीं है रिश्ते की कि आप पे दांव लगाए, कोई उस बंदिश नहीं है किसी प्रोजेक्ट की कि आप पे दांव लगाए, लेकिन वो आप पे फिर भी दांव लगा रहा है, और वो दांव पैसे का लग रहा है, वो दांव एक फ्यूचर का लग रहा है. सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड एक्नॉलेज दैट जेस्चर ऑफ द पर्सन. उस व्यवहार को, उस बिहेवियर को एक्नॉलेज करो और नमन करो, मन ही मन उसको. यू शुड फील ग्रेटफुल अबाउट इट, दैट वाओ देयर इज समबडी हु इज बेटिंग ऑन मी. बिकॉज अगर आप पे कोई दांव लगा रहा है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको आप पे भरोसा है. उसको भरोसा है कि यार ये इंसान ये कुछ कर पाएगा, या आगे अच्छा बन पाएगा, ये काम को अच्छे ढंग से कर पाएगा. और ये भरोसे की कीमत मालूम है आपको? If somebody believes in you, somebody has some trust in you that you can do things, forget about doing things. If somebody even have this belief about us or this thought about us that this guy can become better, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है रिश्ते में? तो ऐसे लोगों को होल्ड करके रखो, ऐसे लोगों को संभाल के रखो जो आपके बारे में सोचते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बड़ी कम है. There are not many people in the world who feel, who wish we can do better. So somebody who's betting on you, उसको तो पकड़ के. And the bet can be in any form. The bet can be in the form of people investing money on you. The bet can be in the form of people giving you responsibilities. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो और आपको प्रमोशन मिलता है, या आप बोलते हो कि सर आई वांट प्रमोशन, आई वांट अ हाइक इन सैलरी, अलोंग विद हाइक इन द सैलरी मे बी यू गेट अ प्रमोशन और यू गेट सम बिगर टास्क टू डू. दिस मींस आप पे किसी ने दांव लगाया है ना, कि आप उस नई जिम्मेदारी को बखूबी करोगे, अच्छे ढंग से करोगे. So you got to acknowledge that, number one. And number two, which is also an important part, you got to make that bet successful. उसका दांव खाली नहीं जाना चाहिए, उसका दांव कामयाब होना चाहिए. तो पूरी जान लगा दो उस दांव को कामयाब करने में. एक तो है कि आप खुद पे दांव लगाते हो, राइट? उसमें अगर ढीलापन रहा तो चलेगा, उसमें अगर आप कहीं कम पड़ गए चलेगा, क्योंकि आपने खुद पे दांव लगाया ना. लेकिन जब कोई और आप पे दांव लगाता है, उसमें ढीलापन नहीं चल सकता, उसमें ढीलापन होना नहीं चाहिए. उसमें तो इतना आपने अपने आप को झोंक देना चाहिए, अपने आप को उसमें इतना डाल देना चाहिए कि आप somewhere that person feels wow about betting on you. तो जब कोई इंसान आप पे बेट कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके बेट को, उसके दांव को कामयाब करो. और जब आप ऐसा कर देते हो, somewhere उस इंसान की हिम्मत बढ़ जाती है to put more bets on more people. और इस दुनिया में बड़ी जरूरत है ऐसे लोगों की जो दूसरों पे दांव लगाए. बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो अपनों से हटके दूसरों पे दांव लगाए. And because that's what is missing in the world. As people are betting on their own, maybe on their family, on their immediate people, but they're not betting on outsiders. और ऐसे कितने लोग हैं जो उस बेट से वंचित रह जा रहे हैं, and they're not able to move ahead in life. They're not able to maximize on their presence on this planet. So what I want to communicate to all of you today is that there are people who are betting on us. Right? Ensure that you give your best in that scenario. आप उसका दांव सही कर दो. Just like if you go to a race course, or if you see a horse race there, और घोड़ों पे दांव लग रहा है,
And their horse cannot speak, the horse cannot share the emotion, the horse cannot understand what's happening. But अगर सब मान लो कि अगर घोड़े की काबिलियत होती समझने की, घोड़े की काबिलियत होती है वो जो सिनेरियो है उसको सीक्वेंस करने की, और उसको मालूम पड़ता है यार मुझ पे इतना दांव लगा हुआ है, तो घोड़ा क्या करता? कितने लोगों ने मुझ पे दांव लगाया है, तो वो कहता है यार इनका दांव जो है ये बेकार नहीं जाना चाहिए। अगर समझदार घोड़ा होता, अगर खुददार घोड़ा होता, तो कहता है यार इन सब ने मुझ पे दांव लगाया, मैं जान तो लगा दूंगा। I don't know whether I'll succeed or not, but I will give my best. I will ensure nothing of me is left in the race. I will give everything of me in the race. तो हम वो घोड़े हैं यार जो जिस पे किसने दांव लगाया, माँ बाप ने दांव लगाया, टीचर्स ने स्कूल में दांव लगाया, टाइम देके, एफर्ट देके, कि कहीं ना कहीं उनको मन में था कि ये अच्छा बन जाएगा, ये बढ़िया बन जाएगा. So we were sent to the best of schools, to the best of the ability of our parents. They ensured that we got things which they could not get in life, and they did whatever they could do, and we all know what our parents did for us. They sent us to schools which were much better than which they went to. They gave us facilities which were much better than what they had in life, and that's what every parent does. But somewhere behind that was this thought that this chap, this boy, this girl, ये कुछ अच्छा करेगा. तो जब भी कोई हम पे दांव लगाता है, वो हम पे एक भरोसा जताता है कि यार तुम अच्छा कर सकते हो. And that is so wonderful, isn't it? हेलो, एबल टू कुछ बात पकड़ में आई? सबसे गरीब वो लोग होते हैं ना जिनके आसपास कोई दांव लगाने वाला, दांव लगाने के लिए नहीं होता. सबसे गरीब वो होते हैं जो किसी पर दांव नहीं लगाते, जिनके पास दांव लगाने के लिए लोग नहीं. सो सी पीपल अराउंड यू, एंड इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस पीपल, मे बी एज अ लीडर, मे बी एज एन एंटरप्रेन्योर, मे बी एज अ फ्रेंड इन अ फ्रेंड सर्कल, एज अ फ्रेंड, तो यार दांव लगाओ लोगों को. Bet on people, and you can bet on people by so many things. Give them responsibilities. They may fail, they may pass, we don't know, but दांव लगाना तो हमारा काम है ना. और उसमें कोई आदमी निकल गया आगे, that person will be so very thankful to you for the rest of his life. तो जब आप बेट करते हो, होता क्या है, एक बड़ा सिंपल सी चीज होती है. तो हमने कहा दांव लगाने से क्या होता है, दांव कैसे लगाते हैं? either you bet the person, you bet on the person with some investment. जैसे मैंने बताया, बैच में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी टीम पे इन्वेस्ट किया. सो आई रिमेंबर वन कॉन्वर्सेशन व्हिच आई हैड वन ऑफ द टीम मेंबर्स, जब मैंने इसको बंद किया था एक्टिविटी को कि मुझे नहीं कर लोग टीम मेंबर्स चाहिए. एंड द रीजन व्हाई आई स्टॉप टीम मेंबर्स इज बिकॉज दिस चैप, उस समय हमारी फीस होती थी करीब आई थिंक 5,000 रुपए फीस होती थी, वे बैक इन 2005 और 6. 5 या 7 6 हजार रुपए फीस होती थी हमारे बैच की. एंड आई सॉ वन टीम मेंबर सिटिंग देयर एंड एज इफ डिसइंटरेस्टेड, उसको कुछ लेना देना नहीं बैच में. सो इन द ब्रेक टाइम आई आस्क्ड हिम, do you know your boss has invested some 6 7 thousand rupees on you? He says, huh? I said, do you know what it is? What that means? You could have saved that money and not put you here in the batch. And you're sitting here as if you're doing a big ihsan on your boss, on me, by coming and sitting here. This approach will not take you anywhere in life. मैं तेरे ऊपर आज तक किसने दांव लगाया? Tell me who else in whatever companies you worked in life, who has put a bet on you? And when they've put a bet on you, they have somewhere told you through this action of theirs that we trust you, we believe in you, we believe that you can do a lot better in life. उसकी ताकत मालूम है कि कोई कोई विश्वास कर रहा है हम पे कि हम अच्छा कर सकते हैं, उसकी पावर मालूम है. ऐसे कितने लोग हैं तेरे लाइफ में जो तेरे आसपास घूम रहे हैं, जो तेरे को देख के बोलते हैं यार आई वी थिंक वी बिलीव यू कैन डू बेटर.
और तू इस अपॉर्चुनिटी को, इस जेस्चर को तू ऐसा एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है. But I could sense that there is no sense of acknowledgement there. And I think somewhere कुछ एक आध sessions के बाद या कुछ एक आध batches के बाद I decided we will not have nominations like this. We should have nominations only when people are eager from their side to become better. And then we stop. ओहो, ये कितना बड़ा, किसने क्या नोट लिखा है? ये मयूर ने लिखा है. अरे बाप रे. But we should also respect if we bet on ourselves and perform to best of ability so we can keep on going. Please help to understand the thin line, sir. How can one navigate the fine line between being externally grateful to someone who has provided financial support during challenging times and maintaining personal boundaries when it comes to life decisions? Especially, how should one handle a situation where the benefactor begins to feel entitled to influence or control one's choices after success has been achieved? Thank you. Oh my God. ठीक है. It's an aspect of maturity, Mayur, when we talk about this very thought process that we have betted on somebody, we have been helpful in some way to somebody in somebody's life. And he says, how should we handle a situation where the benefactor begins to feel entitled to influence or control one's choices? When somebody has betted on you or somebody has helped you in some way, that person did not buy your life. And if you have been of help to somebody, you did not buy his life. Now, this clarity has to be there. This maturity has to be there. As a sense of acknowledgement, I may be grateful to you that you were of help to me at so and so time and you made me what I am today. I'm grateful and I'm thankful and I'll respect you and I'll love you for that. But I have my life to look ahead and I will take some decisions which I have a right to. Maybe as a parent, you did invest your life, your young days, and your your wealth on me to establish me in the way I am today, and I'm grateful and I acknowledge it. But the future of mine, will I have my future at your feet? That will be so immature on my side. Just because you did so and so for me, मैं अपने future को आपके कदमों में रख दूं. This is not it. And if I'm doing it, somewhere I'm not a very strong person. And I'm not doing justice to it because deep inside that person also would not want me to let go of my future and put that future at someone else's feet. So ये मेरी immaturity होगी. That's from the receiver side. Now from a giver side, if I have been the one who has been of help to somebody, me expecting that out of this help, this person would become my slave or entitlement मिल जाएगा मुझे उसकी life का, तो ये मेरी भी immaturity है. Why did I help the person? Why did I bet on the person? और अगर ऐसा था तो आपने बॉन्ड साइन कराना चाहिए था ना उसके साथ कि ना I'm betting on you, I'm putting so and so amount on you, I'm helping you on so and so, I'm educating you, I'm doing. अभी ये बॉन्ड साइन कर कि ये इसके बाद अभी the rest of your life you're going to be running your life, living your life as per my whims and fancies. तो फिर बॉन्ड साइन करा लेते. आपने हेल्प करी, आपने मदद करी because you felt that person was capable of doing something better. And you felt great about yourself that you could be of help to somebody. You did not do it because you wanted acknowledgement. You did not do it because you wanted the person to be there. आपने खरीदा नहीं उस person को. तो ये आपकी immaturity होगी that you start thinking in that way. So all organizations who are investing money on the team members to become better, it is no guarantee that the person, and it is not a bond that this person is going to stay with you for life. Of course, you can have a bond kind of a thing in professional setup that we are investing so and so money on you, and we expect that you stay with us for a couple of years. And that clarity, even big organizations, they have the clarity, but they have the clarity at the time of hiring. That when big companies hire, they say we will train you for the next 3 years,
we'll put so much of reserves and resources and all that thing in you because we feel that our company requires that kind of skill sets. तो आप आते हो, आपको हम ट्रेन करेंगे, आपको हम यहाँ भेजेंगे, आपको हम वो करवाएंगे, 2-3 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा. So we have a bond that you will not leave the company for the next 3 years. And if you leave, you are entitled to pay the company so and so amount of money because that's the money we have invested on you. तो ये at the time of hiring बोला जाता है. अब आपने हायरिंग में कुछ बोला नहीं. You have hired somebody on board and the person is working and after some time you kind of feel that this person lacks in so and so skills, so आप उसको वो सिखाते हो, इन्वेस्ट कराते हो, कहीं भेजते हो ट्रेनिंग के लिए. There you cannot have a bond. You should not have a bond कि अभी ये इन्वेस्ट किया है, but you can have an agreement that भाई ये इन्वेस्ट किया है because this is the responsibility we are giving to you, but there is no guarantee that person will say you did it because you felt this person is bettable. ये घोड़ा जीत सकता है तो इसमें दांव लगाते हैं. तो ये मैच्योरिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए. जो रिसीव करता है उसको भी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो दे रहा है उसको भी गुलाम एक्सपेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए. हाँ जी, एब्सोल्युटली सुशील. बट होता क्या है इन ऑर्गेनाइजेशंस, people ask me in as entrepreneurs, they ask me, sir, should we have a bond signed? मैंने क्या कर लोगे बॉन्ड साइन करा के? What if the person does not live as per the bond? What will you do? You'll file a case. You'll do legal things. वो काम है क्या अपना? उसकी लीगल टीम खड़ी करोगे, उस लॉयर को पैसा दोगे, वो काम है अपना क्या? अगर दिल का बॉन्ड नहीं लगा तो फिर ये पेपर बॉन्ड क्या चुकेगा यार? पेपर बॉन्ड इज सो वीक. if you could not create a bond with a team member from your heart, क्योंकि इससे बढ़िया बॉन्ड, इससे जबरदस्त बॉन्ड नहीं हो सकता. पेपर बॉन्ड इज पेपर बॉन्ड. क्या वैल्यू है इसकी? सो एब्सोल्युटली राइट. बॉन्ड क्यों जब बॉन्डिंग है? so that's how it is. So if you're running an organization, do bet on people. When you bet on people, the bond between you and your team will become very strong. The betting can be in any form. The betting can be of even a simple bet of you buying a book and giving it to somebody and you say, you read this book. वो 300-400 रुपए का दांव भी बड़ा अच्छा दांव होता है. It can be also not even that. It can be even a free bet that आपने कहीं कुछ अच्छा आर्टिकल पढ़ा and the article was not in relation to your work but somebody else's work and you said, यार ये पढ़ लेना, ये I found this is good, and you just give that article. So you kind of putting an effort for somebody else. So sometimes it is an investment which you do. Sometimes the bet is in the form of a responsibility. That you give a responsibility. इसका मतलब आप दांव लगा रहे हो उस इंसान पे कि यार ये इंसान काम कर सकता है, भरोसा है आपको उस पे. तो कोई भी जब आप पे भरोसा जताए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस भरोसे को आप सही साबित करें, क्योंकि उसका भरोसा फिर और बन जाता है और लोगों पे दांव लगाने की. एंड द लास्ट थिंग व्हिच इज देयर, फर्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द बेट. सेकंड इज यू इंश्योर दैट द बेट, जान लगा दो उस बेट को सही करने में. थर्ड थिंग, once you have benefited from the bet, once you have become better from the person betting on you, the third thing which you got to do is you got to become strong to bet on people. आप वो लेगेसी आगे लेके कि जिस ढंग से आपके बॉस ने आप पे दांव लगाया, उसी ढंग से जब आप बॉस बनोगे तो आप अपनी टीम पे दांव लगाओगे. जिस ढंग से आपके पेरेंट्स ने आप पे दांव लगाया, उस ढंग से आप भी अपने बच्चों पे दांव लगाओगे. And for that you have to become strong. You have to become capable. And that's how the legacy of betting goes. And the world has become better, or is what it is today on the good side, is because there were people who were betted on. And that's how it happens. हाँ जी. तो जब आप दांव लगाते हो किसी पे तो आप उसके पोटेंशियल को पोक करते हो, उसकी क्षमता को झंझोरते हो.
उसकी क्षमता को आप ऐसा हिलाते हो, एंड देन यू क्रिएट अ चांस, आई एम नॉट सेइंग गारंटी, देयर इज अ चांस कि उसके पोटेंशियल बाहर आए, there's a chance that potential is provoked to such a in such a way that there is a breakthrough in that person's life. We all want breakthroughs. We all want some form of success. We all want to achieve some kind of growth. That's a breakthrough in life. But for the breakthrough, you got to use your potential. And that potential जो है वो अगर वो dormant है, वो सो रहा है, तो फिर आप breakthroughs achieve नहीं कर पाओगे. And yesterday in the batch, I was sharing with the entire batch that we all have tremendous potential. We all have. It is that potential is not being put to use. And the biggest tragedy of our lives would be कि हम सब अपने पोटेंशियल के साथ वापस चल दिए. दैट वुड द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, कि हम बहुत कुछ करने के लायक थे लेकिन हम बिना करे निकल गए. बहुत कुछ करने के योग्य थे लेकिन बिना योग्यता दिखाए हम निकल लिए. एंड आई वाज शेयरिंग these words of इरफान खान in the batch yesterday, कि इरफान खान ने इतने बड़े ढंग से बोला कि जिंदगी छोटी नहीं होती है. ये हमें लगता है कि वो छोटी है, जिंदगी छोटी नहीं होती. हम थोड़ा देर में जीना सीखते हैं और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है. एंड ही कुड बी मोर ट्रू, कि जब तक रास्ते समझने में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है. सो पोटेंशियल हमारा इतना है, और बहुत से लोगों को पोटेंशियल कब समझता है, जब वक्त निकल जाए. एंड वो समझता कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेट्स. आपको आपके स्कूल का पोटेंशियल कब समझ में आया, कि आपके स्कूल के दिनों में आप क्या कर सकते थे? ऑफ कोर्स वंस यू हैड पास द स्कूल. When did you come to know the potential of your teenage and your young adulthood days? Of course, when you pass that age. When did you come to know the potential of your bachelorhood days? Of course, once you got married. When did you realize the potential of your early marriagehood days? Once you had a child. And when did you realize the potential of you being a young parent? Only when the child had grown and gone to school or gone to college. And that's how it has been for most of us. Potential की समझ, जिंदगी की समझ हमें आती है जब उस फेज से हम बाहर निकल जाते हैं, और तब तक शायद बहुत देर हो जाती है, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो काइंड ऑफ a wake up call to each one of us. Maximize your living. And lot of, I'm saying you got to poke your potential from your own side, but there are times when people also poke our potential. And one of the best ways by which people can poke our potential is when they bet on us. तो जब आप पे दांव लगा है और लगाया है लोगों ने, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी लोगों पे दांव लगाओ. कोई तो है आपके आसपास. मैं हर एचएम आता हूं यार, आपको बात करता हूं, हर एचएम आपके बात करता हूं. आई बेट ऑन यू. अपना समय देके आई बेट ऑन यू. मैं आप पे दांव लगा रहा हूं कि कोई तो है जो मुझे सुन रहा है. इतने आप सब सुनते हो मुझे, हर हफ्ते सुनते हो, और मैं इसी उम्मीद से आता हूं कि मैं दांव लगा रहा हूं, कोई तो है जो मेरी बात को उठाएगा, पकड़ेगा और अपनी जिंदगी को अच्छा करे. एंड आई विल कीप ऑन बेटिंग. आई विल कीप ऑन बेटिंग. मुझे भरोसा है कि आप में से कोई ना कोई, या आप में से बहुत से लोग, या आप में से सभी लोग अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ. ये मुझे भरोसा है. क्योंकि जिस दिन ये भरोसा उठ गया मेरा, मैं उस दिन एचएम नहीं लूंगा. जिस दिन मुझे लगेगा नहीं, आई कैन नॉट, आई डोंट रिलाई ऑन पीपल एनी मोर, आई डोंट थिंक द वर्ल्ड कैन बिकम बेटर, दैट डे आई विल स्टॉप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. सो देयर आर पीपल अराउंड अस हु आर बेटिंग ऑन अस. एंड वो जब बेट करते हैं तो हमारे पोटेंशियल को वो पोक कर रहे हैं, वो हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये अपने पोटेंशियल से कुछ करेगा, ये अपने पोटेंशियल से कुछ चीज बाहर निकालेगा और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएगा. दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज. एंड हियर एवरीबॉडी विंस. आई मैक्सिमाइज माय पोटेंशियल, एंड द वन हु इज बेटर ऑन मी फील्स गुड दैट ओ, ये मेरा दांव सफल हो गया.
क्या कह रही है मानसी? सर आप हर सैटरडे हमारी जिंदगी को बहुत बेटर बनाते हैं। लव यू फॉर बीइंग, फॉर बेटिंग ऑन अस। इन अ वे यू ऑल आल्सो बेट ऑन मी। तुम भी अपना समय देते हो, तुम भी तो दांव लगाते हो मुझ पे, राइट? यू कम ऑन एवरी सैटरडे मॉर्निंग एंड यू फील आज तो कुछ अच्छा बोलेंगे सर, आज तो मुंह से अमृत निकलेगा, आज फूल बरसाएंगे सर के मुंह से, आज तो ऐसा कुछ होगा जिससे जिंदगी बदल जाएगी। तुम भी मुझ पे दांव लगाते हो ना हर सैटरडे को। एंड आई लव यू ऑल for betting on me every Saturday. And that's how life is. Hmm? So we bet on each other. There are times when I hear this story in the batches, especially in my business batches. Okay, Chrysalians they bet on their friends. They say to the friend, "Tu जा, अरा समझती जा, तेरी फीस मैं दूं." ये दाव लगाते हैं, जा, all the fees, तीन चार पांच जो भी फीस है हम देंगे. And I've heard this story in the batch that the participants come and they say, ये कैसा इंसान है जो मेरी फीस देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ये दांव लगा रहा है. Had we not had these betters around, the world would not be such a wonderful place, isn't it? रुपेश क्या कह रहा है? कह रहा है सर वी ऑल लव यू. अरे वाह रुपेश, खुश कर दिया तुमने. लव यू टू, लकी टू गेट अटैच्ड. अरे वाह, थैंक यू वैभव. सर कभी कभी बेट लगाना जबरदस्ती लग सकती है ना, सो शुड वी स्टॉप बेटिंग ऑन देम. देखो, अभी देम कौन है मुझे नहीं मालूम, बच्चे हो सकते हैं, यू नो. ऐसा लगता है कि हम कितना बेट करें बच्चों पे, या कितना, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो जाए कि हम उनको कहीं पुश कर रहे हैं, यू नो, बियॉन्ड व्हाट वी शुड. नाउ दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव कॉल आई फील मानसी. एंड ये हमारी मेच्योरिटी पे होगा कि हमारे बेट उनके लिए क्या करना है. बट मुझे, अगर मैं आपसे ओवरऑल ऐसे जनरलाइज तरीके से बात करूं तो मुझे लगता है जब तक हम किसी से प्यार करते हैं, जब तक हम किसी से प्यार करते हैं, जब तक हम किसी के लिए कंसर्न है, तब तक आपका दिल बोलेगा दांव लगा. तो मुझे लगता है जब तक हम प्यार करते हैं, हमारे दांव लगाने के तरीके बदल सकते हैं, बट दांव लगाना नहीं छोड़ना उन पे जिनसे आपको मोहब्बत, जिनके बारे में आप सोचते हो, कंसर्न रहते हो, दांव लगाओ. जिनके बारे में आप सोचते हो कि यार ये, जिन पे आपको भरोसा है, तो दांव लगाओ. उसके रूप बदलो. वो आप इंडिविजुअली अपने ऊपर है कि हमने इसको कैसे रूप देखना है, बट मुझे लगता है दांव लगाना मत छोड़ना. अगर आपने दांव लगाना छोड़ दिया, इसका मतलब आप बोल रहे हो अब मुझे इस घोड़े पे यार विश्वास ही नहीं. इमेजिन टू दैट हॉर्स व्हाट विल हैपन, कि उसके मालिक ने, ऑडियंस ने, जितने लोग आए हैं, उन्होंने कहा इस घोड़े पे दांव नहीं लगाने. हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, हार मान लेगा वो. तो दांव लगाते रहो. और जो दांव लगाता है ना, उसका दिल बड़ा होता है, क्योंकि जब भी वो दांव लगाता है, हर बार वो दांव कामयाब नहीं होता है. तो मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूं कि अगर आप पे दांव लगाया, तो आप वो घोड़े बन जाओ कि रेस जीत के दिखा दो. और अगर आप दांव लगा रहे हो, तो दिल बड़ा रखो. हर दांव कामयाब नहीं हो, लेकिन दिल अगर बड़ा है तो आप फिर दांव लगाओगे किसी और पे, फिर दांव लगाओगे किसी और. Sir, I'm blessed to have Sushil sir as my mentor and lucky to meet you, sir, because of Sushil sir. सोनल, उन्होंने दांव लगाया है सुशील ने, बहुत जाबाज इंसान है सुशील. साक्षी क्या कह रही है? सर एवरी हैप्पी माइंड्स यू टेक डिफरेंट, योर टेक्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वो होना ही चाहिए ना कुछ तो देखो नया. It can't be the same because I'm not the same as last week. I'm not the same as last month or last year. I change, and when I change, my delivery will also change. My thoughts change. What I share will also change. So जो दांव लगाते हैं उनके दिल बड़े होते हैं, और उनको भरोसा बहुत होता है. जिस दिन आपने दांव लगाना छोड़ दिया, इसका मतलब आपका भरोसा खत्म हो गया. और जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, उन पर से भरोसा खत्म हो जाए तो फिर अच्छी बात नहीं. बिकॉज आई फील प्यार का दूसरा नाम या दूसरा रूप भरोसा तो है.
You believe your children can do well. You believe your spouse can do well. You believe your team can do well. जिस दिन ये खत्म होगी बात कि ये अच्छा नहीं कर सकते, तो मतलब वो बॉन्ड कहीं ना कहीं जो है ना, वो उसमें मजा नहीं आएगा. हम्म. Good. I'm happy that you're having some thoughts and you're having some questions on the same. तो questions जो है ना, अगर आपके मन में कुछ questions है on what I shared so far, you can shoot those questions to me. Let's see if we can together go deeper into it. But let me just reconstruct everything by the time you frame your questions. मैं हल्का सा reconstruct करता हूँ whatever I've shared so far. I've shared this very thing that there are people around us जिन्होंने हम पे दांव लगाया in whatever form. कभी वो दांव लगा है पैसे के रूप में, कभी वो दांव लगाया है एफर्ट्स के रूप में, राइट. कभी वो दांव लगाया है किसी ने अपना करियर दांव छोड़ के, कभी किसी ने दांव लगाया है अपना सुख चैन छोड़ के, राइट. तो देयर पीपल हु हैव बेटेड ऑन अस. दैट्स वन. They have betted on us by all these ways. They have betted on us by giving us responsibilities. ये जिम्मेदारी तेरी हो गई, तो दांव लगाया उन्होंने हम. ये नंबर वन. नंबर टू, जब भी किसी ने हम पे दांव लगाया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक्नॉलेज करें. एंड वी आर ग्रेटफुल एंड वी शुड बी ग्रेटफुल कि हम पे किसी ने दांव लगाया. बिकॉज इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ भरोसा कि कोई हम पे भरोसा तो कर रहा है. ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे कोई दांव नहीं लगा रहे. ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे किसी को उम्मीद ही नहीं है कुछ. और इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि कोई आपको बोले यार तेरे से उम्मीद नहीं है. मतलब इससे बड़ा लेट डाउन क्या हो सकता है लाइफ में, दैट नोबडी हैज एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू. अरे जिससे उम्मीद होती है उसी पे तो दांव लगता है. जिससे उम्मीद होती है उसी को डांट पड़ती है ना. जिससे उम्मीद होती है उसी को तो झंझोरा जाता है, हिलाया जाता है. जिससे उम्मीद होती है. सो अगर आप पे दांव लगा रहा है, फील ग्रेटफुल, एक्नॉलेज इट, एंड नेक्स्ट स्टेप इज मेक दैट बेट अ सक्सेस. एंड थर्ड पार्ट इज become so strong that you are able to bet on people around. This is the chronology, this is the sequence of how it is. To ensure that your life is full of bets. तो खुद पे तो हम दांव लगाते लगाते हैं, लेकिन लोगों पे भी दांव लगाओ, and you will see a lot of things will change around. A lot of things. चलो, कोई किसी का सवाल है तो बताओ मुझे. Anybody has any question? I'm looking forward to my batch today. The batch is about, we have a good 70 odd participants are there having a hangama, and today आज उनका public speaking है. You know, they are all kind of, हिले हुए बेचारे. तो मैंने दांव लगाया उन पे कि तुम आज अच्छी स्पीच दोगे, तो मैं कल दांव लगा के आया उन पे that you all will give some awesome wonderful speeches today. So I'm sure all of them would be live wires today. Mm. So all of you have joined me. A lot of people have joined in late. अरे, तो क्या करते हो, क्यों इतना लेट आते हो यार? Suddenly I see a huge number joining in just 20 minutes back. God knows from where. ये कहाँ जागते हैं, ये आत्माएं कब जागती हैं, कब आती हैं. HM starts at 7 in the morning. It does not start at 7:40. Hello everybody. So you miss on the entire concept. जो मैं बात कर रहा हूँ उसका आप पूरा बेस मिस कर जाते हो यार. Don't do that. आपके दांव पे सही उतरने की कोशिश जारी है सर. शाबाश. कोशिश मत करना. कोशिश करने वालों की बोलते हैं ना, हार नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कोशिश करने वालों की हार हो जाती है. आज बैच में बताऊंगा इस सेंटेंस का मतलब क्या है. I'll let you know today, but I'm sure Puram you will give a great speech today. I'm looking forward to it. So आज का चलो टेक अवे फटाफट टाइप करो. आज का टेक अवे क्या था, टाइप करके मुझे बताओ, all of you फटाफट. What's the takeaway? And I'm looking forward to my life for this year. It's going to be in August, just a few months to go, and looking forward to the मेरा सबसे चहीता प्रोग्राम, सबसे दिल का बोलते हैं करीब प्रोग्राम is my life. It's a beautiful uh, you know intervention where
स्पिरिचुअलिटी मेड सिंपल, इतना सिंपल, इतना सरल कि समझ में आ जाए the power of what spirituality is, and in the simplest possible manner. And that's what I'm known for, making things simple. So if you really want to invest your time, you really want to create some beautiful moments for you on the spiritual side, and you want to be with me in the foothills of Himalayas, and एक जबरदस्त powerful time मेरे साथ बिताना है, to come back as a much more rejuvenated person, then my life is for you, right? So you can, if you're really keen on being a part of it, get in touch with my team, and they will share with you the details, and they will also share with you the process of being a part of my life. It is not open for anybody and everybody. You have to nominate yourself, and then we see, and then we understand, and then we decide on, mutually we decide. Hanji. Okay. The dates, yeah, the dates, dates are from 20th to 24th of August. And this is a time with yourself, a date with yourself. You will not be allowed phones, you will not be allowed watches. It's going to be a very different flavor. And just aap hi honge wahan. Nothing else to distract you. हाँ जी, क्या लिखा है? Acknowledge. हाँ, okay, so do a quick टेक अवे, क्या आपके टेक अवे क्या रहे? सो एक्नॉलेज द बेटिंग ऑन यू, जान लगा दो, ठीक है? Kalpana says, was listening from husband mobile, then log in from my mobile. अच्छा यार, ये सुना टेक अवे था. Prepare an environment so that you create and recreate and keep everything going well and positive. ठीक है बलराज, चलो good. Create an environment. Have gratitude towards someone betting on you and also someone you are betting. कपिल, तेरी अगर तू वही कपिल अग्रवाल है, if I'm not mistaken, तेरी स्टोरी बताई मैंने. How you moved to becoming an entrepreneur. How I said that date is not right. To prepone kar apni date. I'm lucky because there are many people around me who bet on me. Similarly, I also bet on my team members. Wow, that's nice. Bet का मतलब भरोसा. Absolutely, Vivek. So make sure that you have a lot of people around you whom you can have भरोसा on. इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपके पास ऐसे काफी लोग हैं जिन पे आपको भरोसा है. कितने पावरफुल फील करोगे आप, कितने स्ट्रांग फील करोगे कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं. और वो कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं इस पे भरोसा कर सकता हूं? जब तक दांव नहीं लगाओगे. दांव लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो. कोई दांव को सफल करेगा, कोई फेल करेगा, कोई भरोसा तोड़ेगा, कोई भरोसा सही रखेगा. ऐसे तो बिल्ड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द वर्स्ट थिंग फॉर द पर्सन कैन बी दैट उस पे कोई दांव नहीं लगा रहा है, राइट? उससे बुरी बात उसके लिए नहीं हो सकती. द वर्स्ट थिंग फॉर यू इज आपके आसपास कोई है नहीं जिस पे आप भरोसा कर सकते हो. इससे वर्ष बात दोनों के लिए नहीं हो सकती कि आपके आसपास कोई नहीं जिस पे आप भरोसा करो, और आपके आसपास कोई ऐसा नहीं जो आप पे भरोसा करे. इससे बुरी बात क्या हो सकती? सो कीप ऑन बेटिंग, कीप ऑन शोइंग दैट belief on people around you. You will see that you will create an environment, an ecosystem around you. अगर आप अकेले हो, इसका मतलब आपने बहुत बहुत लोगों पे भरोसा नहीं दिखाया, या आपने किसी पे भरोसा नहीं दिखाया. So that's what it is for today's Happy Minds. And I need to rush. तो आज का ही विराम लेते हैं. एंड अरे बाप रे, लंबा सा बहुत बढ़िया सा पूरा एचएम का निकाला है जो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा. पूजा ने एकदम बढ़िया सा निकाला है. लव यू बेटा फॉर दिस. शी इज गॉट सम वंडरफुल इनसाइट्स फ्रॉम टुडेज एचएम. कभी तुम्हें समय मिले मरने से पहले पढ़ लेना. लव यू बेटा फॉर कैप्चरिंग इट सो वेल. मैं इसको पढ़ता हूँ बाद में. ठीक है, चलो, लव यू ऑल एंड make a great life. And this week should be a week of betting. Bet on people. भरोसा करो लोगों पे, दांव लगाओ लोगों पे, अच्छा बनाओ लोगों को. And it's okay whatever they do of that bet of yours, that is up to them. वो घोड़ा भागे ना भागे, आपने तो दांव लगाया उस घोड़े पे, ठीक है? और कब तक दांव लगाने का? जब तक उस घोड़े से प्यार है, जब तक उस घोड़े पे भरोसा है. So love you योगेश, अंकित, God bless. शिवांगी होगी, अंकित तो होगा नहीं.